Hey, good morning guys. Welcome back to the channel. So आज हम जा रहे हैं वागोटन क्रीक which is almost like 50 kilometers from here. But उससे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल काफ़ी कम है. So चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र. इतना फ्री फ्लो ट्रैफिक का जो एक्सपीरियंस है ना, कि मतलब किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स तक रोड खाली है एंड यू हैव जंगल्स नियर यू, ये फीलिंग ही कुछ अलग है. एंड ऑल्सो आपकी जो गाड़ी है वो बहुत फ्रीली ब्रीथ करती है ऐसे सिचुएशन में. नहीं तो जनरली हम जो मुंबई में ड्राइव करते हैं it is hardly 20 kilometers per hour, 25 kilometers per hour. यहाँ आप देखिए आपका गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगा ऐसे रोड्स पे. भले ये वन वे रोड्स है या छोटे रोड्स है, बट व्हेन यू आर ड्राइविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड एंड विदाउट एनी ट्रैफिक, तो नो वंडर आपका गाड़ी है अच्छा एवरेज देगा आपको. अब कल के पूरे ट्रिप पे the average that I got for this car was almost 16 kilometers per liter, which is good. Even जब last time हमने सिंधुदुर्ग में ड्राइव किया था, तो the fuel efficiency given by this car was almost 17 to 18 kilometers per hour. Looking at the roads, it is too good. अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे विच विल कनेक्ट अस टू देवगढ़ नेपानी हाईवे. और अभी हमको ढूंढना है पेट्रोल भरने के लिए. तो चलो पेट्रोल पंप ढूंढते हैं पहले. मानसून के बाद देखिए कितनी घास उग गई है यहाँ पे.
Now we will go towards our journey. Vijayadur 26. अभी हम स्टेट हाईवे पे हैं. वी आर गोइंग टुवर्ड्स विजयदुर्ग. सो बेसिकली हम अभी एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं विच इज अ विला supposedly claimed by the British to be made during their era. ये जो डांबर का रोड है ना, इसमें गाड़ी चलाने में जो मजा आ रहा है ना, एकदम मस्त का रोड. आपको अगर दिख रहा होगा तो आई एम ऑलमोस्ट डूइंग 80-85 ऑन दिस रोड एंड ऐसे नज़ारों के साथ ड्राइव करने में अलग ही मजा आ रहा है. ये बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं यहाँ पे ड्यू टू द नेचुरल माउंटेन्स. कोंकण में ना आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से मिलेगी, वो है काफी सारे मंदिर. ये क्रीक एरिया है वाघोटन का, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं. एंड क्या मस्त व्यू है.
Now I am excited for visiting the place.